This is one of the largest temple restoration puzzles in India. Over 200 temples collapsed here. Stones were scattered everywhere. Archaeologists literally rebuilt them like Lego, using the original stones. They had to figure out which stone belonged to which shrine. What makes Bateshwar Group of Temples remarkable is that this restoration is still ongoing. Temple after temple is being carefully reassembled from original fallen stones, like a sacred jigsaw puzzle slowly finding its shape again. An earthquake may have brought these temples down, but human patience and devotion brought them back to life. Unlike many histories full of conflict, here the story is about earthquakes, time, and patient rebuilding. This gives hope. There was a time when explosions from stone mining echoed across these hills, and this heritage was at risk of vanishing forever. Thankfully, it was saved, just in time. Before restoration could begin, the archaeologists had to convince authorities and locals and shut the mining activity. Bateshwar wasn't built as one temple. It was built as a sacred city of temples, where devotion lived in every corner. Archaeological studies indicate that this site originally had over 200 small temples spread across the hillside. These temples may be small, but together they form one of the most peaceful and elegant heritage landscapes in India. हेलो सर, क्या हाल है? मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये कौन सा मटेरियल है? ये भैया का मटेरियल का चाहिए। ये तो ईंट है। ईंट का? हाँ, ईंट किसी भी ईंट है, चूना है, गुड़ है, समय है। गुड़ भी है इसमें? गुड़ पत्थर और बजरी है। अच्छा, बजरी उसको क्रश किया हुआ? हाँ, मशीन में क्रश हो गए, उसके बाद फिल्टर हो गए, फिर पॉइंट करते हैं। नहीं, ये पुरानी चीज है। वही हमें पता नहीं चल रहा था कि ये चिनाई कैसे करते हैं। इसी से होती है। ये और निकलेगा नहीं। आपके चैनल का नाम क्या है? iBodh, IBODH। देखो ये सामने करा कितना मजबूत हो गया वो। आपकी बहुत मेहनत है। मेहनत तो है ना? मेहनत तो मेहनत करना चाहिए। चलिए, आपका नाम लिखा गया इतिहास में है कि आपने ये दोबारा से किया। ये पुरानी धरोहर है। सही बात है। और इतनी ये कारीगरी कहीं देखने को मिलती नहीं। यही नहीं है। हाँ, कितनी सालों में ये बना होगा। कब से काम स्टार्ट किया यहाँ? 2005 से। 5 से चल रहा है। ठीक है। थैंक यू सर।
नमस्कार सर। ये इनको फिट पत्थरों को लगाना है वापस, है ना? हाँ जी, वापस लगाएंगे। अच्छा, ये लगाएंगे मार्च के बाद में। मार्च के बाद में, ठीक है। अभी तराई कर रहे हैं? हाँ, जो पॉइंटिंग हो गई है, ओके। इसकी तराई कर रहे हैं। These temples show early North Indian architecture in its purest and simplest form. आपका वीडियो दे दूं मैं बीच में, यूट्यूब में डाल दूं? आप यहीं के हो? उधर। ठीक है। भैया ऐसे ऊपर रखे जाएंगे जब पत्थर, तो फिर ये यूज होगा चिनाई इसी से होगी फिर? अच्छा, इसके ऊपर चादर रखी जाएगी, चादर के ऊपर। अच्छा, हाँ, जो चादर है ये चादर रखी जाएगी, उसके ऊपर स्ट्रक्चर आ जाएगा। You can easily notice Nagara-style shikhars, tiny sanctums, carved door frames, rhythm and repetition, harmony with nature. Signs of North Indian architecture. Many shrines still have Shiva lingas. People still pray quietly, so it's living heritage, not a dead museum. Even after 1,000 years, this is still a place of faith. Not just broken stone, but living devotion. ये चल नहीं रहे, उधर एक मंदिर चल रहा है। हाँ, उधर एक मंदिर चल रहा है। ये तो सब वही रूइंस है ना। हाँ, The layout of Bateshwar shows a quiet understanding of water management. Temples placed on terraces, raised platforms, and natural slopes that allow rainwater to drain away without harming the shrines. Behind the rows of temples, there is a small ruined structure, almost like a forgotten room. And from there, I carefully climbed up using old stone steps carved into the wall. The climb is narrow and uneven, and I wouldn't recommend attempting it casually. But from the top, the view opens up beautifully. Standing here, it feels like time slowed down, like the world outside paused for a moment. Archaeologists are still piecing together stories.
Restoration is ongoing. The site still has unanswered questions. 6 मंजिलों में है ये सारा, है ना? The temples are arranged on terrace levels along the hillside. Rainwater naturally flows downward away from sanctums. If you ever find yourself near Gwalior or Morena, take some time to come here. Walk slowly, look closely, and let the place speak for itself. Thank you for joining me on this journey. I'll see you in the next one. ये आपका नाम लिखा गया इतिहास में है कि आपने ये दोबारा से आपका वीडियो दे दूं मैं बीच में यूट्यूब पे डाल दूं। मार्च के बाद में आपके चैनल का नाम क्या है? IBODH IBODH। गर्भ जो पहले से विद्यमान, वो भूत भविष्य का महान स्वामी महान। धरती और आसमान को धारण कर किस देव की आराधना करें हम गाकर। किस देव की आराधना करें हम गाकर। किस देव की आराधना करें हम गाकर। अग्नि संभाले गर्भ में जिसका, राज जल बिखरा इधर उधर चारों ओर, उस प्राण का आधार कौन है प्रकट। किस देव की आराधना करें हम गाकर। ओम सृष्टि के सृजन करता, स्वर्ग के रचयिता, सत्य धर्म के पालन करता, चल के नियामक हर दिशा में, उसकी है गूंज हर स्वर। ऐसे देव की आराधना